High-stake polling for the MCD concludes in the capital. Low voter turnout mars the elections. Kashmiri pundits demand security after Lashkar releases hit list with 56 names. Day ahead of the crucial phase 2 polling, Prime Minister Modi meets his mother in Gandhinagar. Visakhapatnam witnesses grand celebrations of the Navy Day. Starting this edition with that big story now coming in from the poll-bound state of Gujarat. Now, this is a big controversy ahead of the phase 2 elections in the state, where the Shahi Imam of Ahmedabad's Jama Masjid has made that sexist, misogynist remark saying that giving tickets to women is against Islam. This is what he said, viewers, giving tickets to women against Islam. Second, he talks about women must let men fight the polls. The third news point that emerges from what he's had to say just a short while back was un-Islamic if you give tickets to women. Women shouldn't be interacting too much. Women shouldn't go out too much. In fact, my colleague Priyanka confronted the sexist imam. Let's listen in first that statement made by the cleric and then the confrontation by my colleague Priyanka. देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है नमाज को है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज़ होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मज़हब कमज़ोर होगा। कमज़ोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है ना। Should not be allowed in politics is something that the Imam of Jama Masjid in Ahmedabad has said. He is in fact joining us right now. Let's get in a word from him to understand what exactly was he trying to say when he said that women are not allowed in politics. Imam साहब, आपने कई सारे बयान दिए हैं औरतों के अगेंस्ट में। आपने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनकी कोई जगह नहीं है राजनीति में। उन्होंने आपने कहा है कि अगर कोई ज़रूरत ना हो या मजबूरी ना हो तब तक औरतों को राजनीति में जाना नहीं चाहिए। सर, आपको किसने बनाया कस्टोडियन औरतों का कि आप बताएंगे कि औरतों को राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देश का कानून है, उसके हिसाब से औरतों को पूरी तरह से राइट्स है। आप क्यों औरतों के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि औरतों को कोई राइट्स नहीं है। बिल्कुल आपने कहा है। नहीं, आप दिखा नहीं सकते हैं, ये गलत। क्या कहने का मतलब था फिर आपका? हमसे कहा गया कि इस्लाम के एतबार से औरतों को खड़ा होना चाहिए। मैंने कहा मजहबी एतबार से मुस्लिम औरतों के लिए, मैंने कहा औरतों के लिए नहीं। तो क्या मुस्लिम औरतों का कस्टोडियन आपको किसने बनाया कि मुस्लिम औरतों को नहीं खड़ा? पहले सुनिए, मुझे किसी ने नहीं बनाया। इस्लाम का जो उसूल है वो मैंने बयान किया है। ये कहाँ लिखा है सर? ये क्या उसूल है? आप कह रहे हैं कि औरतों को खड़ा नहीं। आपने ये भी कहा है कि उनको नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, ये कहा मैंने कहा कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप लोग क्यों खोटी बातें करते हैं? आपने कहा कि यहाँ पे आपने किसी औरतों को कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, तो उसको राजनीति में कैसे खड़ा कर? पहले सुनिए, मैंने ये कहा कि नमाज होती है, नमाज इस्लाम में बहुत अहम है, लेकिन हमारी औरतें मस्जिद में नहीं आती हैं नमाज जैसी अहम इबादत में। तो जब नमाज जैसी अहम इबादत में इस्लाम उनको इजाज़त नहीं देता कि मर्दों के साथ नमाज पढ़ें, तो इस्लामी एतबार से
औरतों को असेंबली में, मुस्लिम औरतों को बैठना या स्टेज पर जो है ऐलान करना, घर घर जाके जो आप ये बात कहते हैं कि औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, औरतों के लिए सब होना चाहिए, तो आप चलो मुस्लिम महिलाओं की बात कर लेते हैं। मुस्लिम महिलाओं के इक्वल, उसको इनको इक्वल राइट्स तो मिलना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, अब हाँ के ना, आप मानते हैं कि इक्वल राइट्स मिलना चाहिए? इस्लाम हर हक देता है औरतों को, तो ये हक क्यों आप छीन रहे हैं कि उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए? पहले सुनिए ये बात, वो इस्लामी कानून है, इस्लामी उसूल है, हम छीन नहीं रहे हैं। बिल्कुल छीन रहे। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी रिलीजन के महिलाओं को, मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं फिर बात नहीं करूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि औरतों को, आपने कहा कि राजनीति में उनको अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, आप मुझे ऐसे धक्का मत दीजिए, पर सुनिए, आपने कहा कि बात करते हैं, कालवाना चाहती है, मैं बोला ही नहीं हूँ फालतू का। अच्छा, आप जस्टिफाई कर लीजिए, आपने क्या कहा? हम तो कह रहे हैं कि हमसे पूछा गया इस्लामी एतबार से, मैंने इस्लामी एतबार से बताया कि जब मर्द मौजूद है तो हमारी औरतों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बात खत्म। अब इससे पहले आपने कहा कि उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सही बात है। अब आपने कहा कि पूरा तरह से इक्वल राइट्स के उनका हक है पूरी तरह से, तो ये आप किस तरह से बोल रहे हैं कि उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए? एक विमेंस रिजर्वेशन बिल भी है, औरतों को पूरी तरह से सारे राइट्स हैं, तो आप किस लीगल तरीके से बोल सकते हैं या किस तरह से आप कह सकते हैं कि औरतों को नहीं आप अलाउ करेंगे? मैंने तो पहले कह दिया, मैं इस्लामी एतबार से बोल रहा हूँ, बात खत्म है। इसका क्या मतलब होगा अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम का जो उसूल है, हिजाब, पर्दा, वो हमारी औरतों के लिए लाजिम है, बात खत्म है। मैं इस्लामी एतबार से बोल रहा हूँ, मैं मुल्क के कानून को कहाँ चैलेंज कर रहा हूँ। पर क्या इस्लामी एतबार और मुल्क का कानून अलग है? हो सकता है कि अलग हो सकता है, पर अभी तो नहीं है ना सर, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर महिलाओं को, सुनिए, कानून बहुत सा अलग है, जैसे 3 तलाक का है, हमारा इस्लामिक कानून अलग है, मुल्क ने कानून अलग बनाया है। फिर भी आपको लीगली मानना पड़ेगा ना, आप देश के नागरिक तो है ना सर। जरूरी नहीं है माने हम, ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे मुल्क के कानून में? ये नहीं है कि आप मानना ही पड़ेगा आपको, ये किसने कहा? तो आप अपना पैरेलल आप बना रहे हैं कि आप अपने हिसाब से बताएंगे आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको जो करना चाहिए नहीं, और आपको किसने पर ये कस्टोडियन बना दिया, ये मेरा सवाल। मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने ये कहा कि ये मेरा आर्डर है, मैंने कहा इस्लाम का हुक्म है। ये कहाँ लिखा है इस्लाम? कुरान में, हदीस में, सब जगह है। कहाँ लिखा है कि राजनीति में अलाउड नहीं है? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कुरान में, हदीस में, सब जगह कहाँ है, बता दीजिए, साइट कर दीजिए। अब आपको हम क्या दिखाएंगे? अंधे के सामने चिराग जलाने से फायदा? आप मुझे ये इसका कोई मतलब नहीं है सर, ये आप इंसल्टिंग मत बनिए। पहले कह दिया कि आपसे मैं बहस नहीं कर सकता, बात खत्म है। जय हिंद। Women should not be allowed in politics is something that the Imam of Jama Masjid in Ahmedabad has said. He is in fact joining us right now. Let's get in a word from him to understand what exactly was he trying to say when he said that women are not allowed in politics. Imam साहब, आपने कई सारे बयान दिए हैं औरतों के अगेंस्ट में। आपने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनकी कोई जगह नहीं है राजनीति में। उन्होंने आपने कहा है कि अगर कोई जरूरत ना हो या मजबूरी ना हो तब तक औरतों को राजनीति में जाना नहीं चाहिए। सर, आपको किसने बनाया कस्टोडियन औरतों का कि आप बताएंगे कि औरतों को राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देश का कानून है, उसके हिसाब से औरतों को पूरी तरह से राइट्स है। आप क्यों औरतों के लिए बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि औरतों को कोई राइट्स नहीं है। बिल्कुल आपने कहा सर। नहीं, आप दिखा नहीं सकते हैं, ये गलत। क्या कहने का मतलब था फिर आपको? First set of visuals now coming in of Prime Minister meeting his mother just ahead of the phase 2 polls. These are the latest visuals that are now coming in. Remember, the Prime Minister was in Gujarat right now. We've witnessed that high-octane campaigning that has taken place just after the first phase of the polling that took place, the roadshow where the Prime Minister carried on for almost several hours put together. And not just one day of campaigning, but 2 days of campaigning back to back, where we saw massive crowds emerging. And apart from the Prime Minister, also we've seen the top leadership of the Bharatiya Janata Party right now campaigning in what they see as a very crucial election. Now, these images that you see of the Prime Minister meeting his mother just ahead of the phase 2 polls, taking her blessings,
And we have seen that the Prime Minister's visit every time in Gujarat during the elections have also been to have that personal connect with the people of Gujarat. As the son of the soil, the Prime Minister has kept that connect with the people of Gujarat, essentially talking about the Gujarati Asmita. We'll try and go across to my colleague Priyanka, who's joining us on this broadcast. We'll try and bring her in a short while from now. Or perhaps we could also get in Abhishek Kapoor on the latest now coming in. These are the latest visuals coming in from Gandhinagar, where the Prime Minister is currently meeting his mother, seeking blessings just ahead of the phase 2 polls. Let's also try and take you through some of the details that we're getting in right now. I'm told that my colleague Priyanka is joining us on this broadcast. Priyanka, we've seen the Prime Minister there in Gujarat, the high-octane campaigning that has taken place, but that's the other side of the Prime Minister, where you're looking at those visuals coming in from Gandhinagar, where he's meeting his mother. And this is just ahead of the phase 2 polls. Ahead of almost every elections, we have seen that the Prime Minister has always gone to his mother seeking her blessings. That's right, Shravan. We're looking at these visuals of the Prime Minister meeting Hiraba, his mother, and of course he's landed right now in Ahmedabad to come for the second phase of the voting, since he himself votes in Ahmedabad. He is from Gujarat, of course, and he votes in Ranip area of Ahmedabad, and that's where he will be expected to be around 8:30 a.m. in the morning, and he will be casting his vote as well. And we can expect these kind of visuals as well that we are seeing of the Prime Minister sharing some light moments with his mother just hours before the second phase of the polling also goes underway, that we have usually seen him do as soon as he lands in the city of Ahmedabad as well. And as you pointed out earlier as well, the kind of campaigning that we have seen from the Prime Minister over the last few hours, in the last 3 days particularly, where he had carried out those massive road shows and rallies that had been organized, that had been addressed by the Prime Minister himself, where he had spoken about a variety of the issues, various issues that concern the people of Gujarat, the electorate of Gujarat, and that's what we had seen the Prime Minister doing in the first phase as well. But of course, the campaign also hitting its crescendo over the last few days, when we had seen him carry out those road shows along with several of the union leaders that have been here in the state, camped out, carrying out that campaign as well. Along with him, of course, the Home Minister Amit Shah as well, who had been in Ahmedabad, who had been in North Gujarat over the past few days and had been campaigning there in Himatnagar, in Mehsana, in Anand, in Ahmedabad, in Gandhinagar, and central Gujarat essentially, that is going into polls that is tomorrow. And we will see tomorrow some of the main faces of the BJP also going to vote in Ahmedabad itself. We will see, of course, the Home Minister going to vote in his constituency, that is Naranpura, from where he had fought as the member of the Legislative Assembly in Gujarat up until he had in fact contested for the member of the Parliament elections in the Lok Sabha. And of course, we have seen how now the campaigning also that had been carried out by the Prime Minister that was being done over the past few days. But as of now, since the campaign has ended, he's now with his mother, sharing some personal time with his mother as well. And of course, we will see him then departing for the Raj Bhavan as well, Shaman. Well, in fact, Priyanka, I'll request you to stay on. We'll try and go across to my colleague Mridul Sharma, joining from outside the residence of Prime Minister's mother. Mridul, just give us a sense of what's the scene like. Every visit of the Prime Minister to any part of Gujarat has essentially seen a lot of people coming out waving at the Prime Minister. There's that eclectic mood that is always there on the ground. What's the situation right now? What are the people saying? What's the sense? What's the mood like? बिल्कुल शवन, मैं सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं कि कैसा मूड है, तो यहाँ पर लोग हैं और सीधे उनसे बात करते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अभी आए और पड़ोसी होने के नाते आपने देखा उन लोगों को। पड़ोसी होने के नाते हमें इतना अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर के और
एकाएक उनका प्रोग्राम बन गया, अपने को पता भी नहीं लगता है। आप लोगों को जैसा मीडिया चैनल के थ्रू हमें पता लगता है तो इतनी उत्साह बढ़ती है। और कल जैसा आप जानते हैं कि गुजरात में वोटिंग है लास्ट फेज का, तो उनको देख करके मुझे लगता है कि आम जो जनता है ना काफ़ी टर्न डाउन होगी कि श्री नरेंद्र मोदी साहब देश के क्या पूरा विदेश का ही आजकल तो उनका रुतबा है। तो 100% मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज 150 बढ़ेगी। और मैं काफ़ी शुभकामना देना चाहता हूँ कि इलेक्शन बहुत अच्छा रहे। जी का आशीर्वाद लेने आए थे, आप पड़ोसी हैं, नेबर हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए, कितना उत्साह है? देखो, ये बात सीखने जैसी है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी सर अपने कोई भी अच्छे काम की शुरुआत अपने माँ के आशीर्वाद के लेके करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। और दूसरी बात, बीजेपी की बात कही है टुमारो अभी वोटिंग का है, और मैं ये बोलता हूँ कि आपको मेरा ये पर्सनल व्यू है कि वो डेफिनेटली बहुत जंगी बहुमती से बीजेपी आएगी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल से इतना काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। और बीजेपी कभी किसी को छोटा नहीं समझती, ऑपोजिशन कोई भी हो, लेकिन वो अपना काम कभी छोड़ती नहीं है। और जिस मुद्दों के लिए बीजेपी ने आज अपने पब्लिक से जो प्रचार किया है, जो वो सारे मुद्दे पब्लिक के सामने ही है, वो सारे ध्यान में रख के बीजेपी आएगी, हमें विश्वास है। आप लोगों में बहुत उत्साह था, प्रधानमंत्री जब गुजरे आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, आपने इशारा भी किया रुकने के लिए। हाँ, हमको बहुत आनंद हुआ और हम उनको ही सपोर्ट करें। और मैं सभी गुजरात वासी से विनती करना चाहता हूँ कि वोट सिर्फ बीजेपी को दे और वन वे जीत बीजेपी को मिलनी चाहिए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं जी, आप भी आए थे यहाँ पर, कई लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, आप तो पड़ोसी हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो किस तरह का माहौल रहता है? प्रधानमंत्री आते हैं तो मतलब कि एक यहाँ का रुतबा ही अलग हो जाता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, उनकी चाहना देखिए, यहाँ पे आप दूर 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 तक देख सकते हो, वहाँ तो भी इतनी पब्लिक आ जाती है। बस ये क्या होता है, एक प्यार होता है, एक जज्बात होते हैं कि देश का पीएम हमारे लिए काम करता है, जिस देश की वैश्विक शक्ति है, ये सत्ता है, अगर उनको इतना सामने एकदम सपोर्ट करती है, तो मतलब देश के प्रति ये युवा लोग उनके जुस्सा और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम भी प्रयत्न करते हैं कि वो भी हमारा और उनका और देश का विकास करें। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, आप लोग भी जब प्रधानमंत्री आए तो आपका अभिवादन स्वीकार किया। हाँ। क्या कहेंगे आप? मोदी साहब को हमारी नम्र विनंती है कि वो जितनी भी बार आए और हम खुश शांति रहे और हम मोदी साहब को ही वोट करेंगे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर देखिए आप, उत्साह तो है और कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सज्जाद अंसारी है, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा। जैसे पहली बार मैंने मोदी सरकार को देखा सामने से, तो हाँ। मैं बहुत दूर में रहता हूँ, लेकिन जैसे सुना हूँ कि आने वाले हैं तो मैं इधर आ गया देखने। दूर से आ गए आप? जी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, सोसाइटी के लोग भी हैं, आ जाइए, आप आगे आ जाइए। क्या आप जो हैं शुरुआत से खड़े थे जब प्रधानमंत्री आए, और पड़ोसी होने के नाते क्या कहेंगे? मैं पड़ोसी का बहुत गर्व है हमको कि हीराबा के बगल में ही रहते हैं। हाँ। तो खुशी रहती है, जैसे मोदी साहब आए तो उनके दर्शन मिल जाते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि वेरी एक्साइटेड श्रवण, एंड व्हेन प्रधानमंत्री मोदी अराइव्स दे चैंट स्लोगन लाइक मोदी मोदी, दे आर वेरी एक्साइटेड। ओवर टू यू स्टूडियो। Thank you very much, Mridul and Priyanka, for getting us the latest updates from Gujarat. Republic Media Network, the only network with the maximum ground coverage. Ahead of that exit polls, we'll have all our reporters deployed across the state to get you the glimpse of what's really happening in this crucial battle. On the other side, Kashmiri pundits demand security after Lashkar releases hit list with 56 names. Visakhapatnam witnesses grand celebrations of the Navy Day. What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. Pakistan that would boast to the Chinese and tell them that, you know, we can guarantee you absolute peace in Afghanistan, build the China-Pakistan economic corridor right through the heart of Afghanistan. But in the last 1 year, more than 300 Pakistani soldiers and policemen have been killed by various factions of the Afghan Taliban. And also the fearsome
terrorist organization, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Today, Pakistan is suing for peace. A high-voltage battle which will decide the nation's political trajectory. Who will break their records and which faces will be the winners? 89 out of the 182 seats go to polls. Stay tuned to India's election news headquarters as Gujarat goes to polls. Live coverage minute by minute all day today on Republic. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Well, that massive furore over YS Sharmila's padyatra. YSRTP Chief YS Sharmila on her padyatra was stopped by the police as she was to resume it today. She has alleged that KCR is the one who is using the police to stop her padyatra. She spoke to my colleague. Listen. Well, now we are here joined in by YSRTP Chief YS Sharmila. Ma'am, we see that your padyatra has once again been put on hold and you have been served notice by the police is what we are being told. Why so, and what do you cite one of the main reasons behind this? Well, the court has granted us permission to carry on the padyatra. In spite of that, the police department has issued a show cause notice to me. Their duty was to abide by the High Court's order and grant me the permission. So this actually is the contempt of court. Since Mr. KCR has put upon himself to not let this padyatra go on, he is using the police department, he is firing from the shoulders of the police department, he is targeting my padyatra and is making sure that this padyatra doesn't move forward. Because he knows the kind of adoration that people have for YSR and YSR Telangana party. So, ma'am, you are trying to say that this has all been wantedly been done by the KCR government. They are trying to stop you. But why so? Because we also see that on the other hand, Bandi Sanjay, who is the BJP state president, is also doing a padyatra. He has also got permission from the High Court, as you also have got one. You say that it's the KCR who is wantedly trying to stop you. Mr. Bandi Sanjay's padyatra is not even a padyatra. He does it 4 days, takes a break of 3 weeks. He does it another 4 days. People don't even take it seriously. So KCR himself knows that that's not a serious padyatra and he's not even done a few hundreds of kilometers of padyatra. But people know that mine is a serious padyatra and people have begun to adore YSR Telangana party. The kind of response that YSR Telangana party is getting among the people is what KCR is not able to tolerate. And that's why he's taken it upon himself. Even though Bandi Sanjay is allowed to do, he is not allowing my padyatra. Ma'am, this sometime back. Well, that's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. We are leaving you with these glorious images coming in from Visakhapatnam, where the Navy celebrated the Navy Day in full pomp. In the lead, you can see the Chetak helicopter in arrow formation, led by Commander Ashish Rana. Give it away for the indigenously built ALH Mark III helicopters, the Kessel formation. Approach from your left of the Panthers in arrowhead formation. Stand by to get swayed.
As Gujarat goes to polls on the 1st of December, 89 of 182 seats will vote. Where high voltage political battle has broken out in the state of Gujarat since the bipolarity of the state. Will the BJP score a record victory in Gujarat? Is the Ahmedabad party even a factor? Politics has been challenged for the first time. Watch the fastest updates only on India's election headquarters on Republic TV. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। What is it that is unique about your father's story to build the largest logistics company? 99% in the movie, it is a real-time story what has happened with us in our life. That's what been captured. Why should a young person watch this film? All the youngsters out there, they want to be an entrepreneur just in overnight. मतलब वो shortcut देख रहे हैं. Any business for that matter or any work for that matter और success आपको overnight नहीं आती. This is that film. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। Hello, welcome you watching live and breaking with me, Shavin Sen. The top story tonight is that massive controversy once again brewing because of the statement that was first made by the Israeli jurist Lapid, who's now being backed by the other foreign jurors. Now, what's important to point out here is that this is a statement which hasn't been welcomed even by the top Israeli delegates. But of course, these are the headlines that we're tracking for you at this hour, and then we'll get you the top story. ऐसे लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। Shameful, sexist and cross comments by the Ahmedabad cleric says women contesting is un-Islamic. On the other hand, it's a victory for Iranian women as Iran abolishes morality police. High-stake polling for the MCD concludes in the capital. Low voter turnout mars the elections. Kashmiri Pandits demands security after Lashkar releases hit list with 56 names. Day ahead of crucial phase 2 polling, Prime Minister Modi meets his mother in Gandhinagar.
Visakhapatnam witnesses grand celebrations of the Navy Day.